how to tell a story for entertainment, for screen. Right. Be it a cinema screen or a television screen or a mobile screen. Every student should learn in IICS, our new institute, and of course other people in the world, other students in the world. Well, they must be having knowledge, they must be having stories, they must be having experiences. How to turn those stories, experiences into entertainment. Welcome to Made for Media, brought to you by Indian Institute of Creative Skills, affiliated with NSDC Academy and operated by Media and Entertainment Skill Council. And today we have with us Mr. Robin Bhatt, a very renowned screenwriter and producer. He has worked extensively in Bollywood and he is known best for writing screenplays of movies like Aashiqui. And today we will be having a tete-a-tete, a lovely conversation with Mr. Robin Bhatt, जो कि बहुत ही जाना माना नाम है बॉलीवुड में. उनकी मूवीज गोलमाल 1 and 2, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और पता नहीं इतनी सारी मूवीज हैं. हम चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और स्क्रीन प्लेज उन्होंने किस किस के लिखे हैं उन्हीं से पूछते हैं. Introducing Mr. Robin Bhatt. Thank you. Hello sir. मूवीज की बात तो भाई करेंगे थोड़ा, but I would like to know the main reason of your joining MESC as a GC member. क्यों किया आपने join? What did you think about MESC? I thought maybe this is the best organization to pass on my skills to the youngsters. If whatever I learned and whatever I have produced and written, if I can pass those skills and knowledge to the coming generation. Right. My legacy will go on. Wonderful. You have done some amazing work. I will be coming to that soon. But how do you feel that how do GC members play a role in shaping up the next wave of education? Well, mastering them, taking master classes, educating them, advising them on the things that they have written. I mean, anybody who was... I believe everybody has a story to tell. Right. Only thing they don't know how to tell. Right. So I can harness that skill into them. If I can teach them how to tell a story for entertainment, for screen. Right. Be it a cinema screen or a television screen or a mobile screen. Right. If I can teach them that, I'm sure they'll have a lot more to say to the entertainment industry. They'll find a profession, they'll make money. Correct. अच्छा, जो नई new education policy है, it insists on vocational training. Yeah. So how does that align with what the industry really needs? Industry needs more and more writers. Right. Writers, those who are coming from the roots, तो जिसको बोलते हैं ना हिंदुस्तान की मट्टी से जो कहानी आती है, वो कहानियाँ चाहिए. Correct. उन लोगों की कहानी चाहिए जो इस देश की मट्टी में रहते हैं. Wow, so beautifully said. पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI एप्स वगैरह आ गए हैं, आधा जॉब तो वो आप लोगों का कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ, लेकिन वो जब उन गलियों में, उन सड़कों में, उन मट्टी में तो कभी नहीं जाएगा एरिया. वहाँ तो नहीं जाएगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उसको कहते हैं कि जो कभी आपने पहले बारिश की खुशबू पहचानी है? यस. जिसको बोलते हैं मिट्टी की खुशबू. ये मिट्टी की खुशबू जो है वो AI नहीं ला सकता. वो सिर्फ जिसके अंदर दिल होता है और जिसके अंदर वो खुशबू पहचानने की ताकत होती है, वही लाता है. वेरी ब्यूटीफुली. बहुत खूबसूरत बात कही आपने, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल. तो रॉबिन जी, हम जानना चाहेंगे आपकी कुछ मूवीज के बारे में, क्योंकि मैंने तो आप 3-4 नाम लिए. थोड़ा और बताइए, और कौन कौन सी मूवीज की है और आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरे लोगों फेवरेट तो देखो, मैंने आशिकी से शुरुआत की, दिल है क्या मानता नहीं, हमें राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, सड़क, ओमकारा, अतिथि तुम कब जाओगे, क्रिश, कोई मिल गया, क्रिश 2,
Krish 3. Wow. All the best. So these are some of the they're all hits, yeah. And that's why I've done more than 75 films. Wow. So, yeah. I should applaud on that. That's wonderful. अच्छा, फिर आप लास्ट मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी से आप क्या चाहते हैं कि every student should learn in IICS, our new institute, and of course other people in the world, other students in the world? Well, they must be having knowledge, they must be having stories, they must be having experiences. How to turn those stories, experiences into entertainment. Wow. Yes. That is the skill that we will provide. No, and वो करने का जो स्किल होता है कि कैसे कहानी लिखी जाती है, कैसे सिनेमा के लिए या किसी सिनेमा थिएटर का हो, टेलीविजन का हो या मोबाइल स्क्रीन का हो, वो सिनेमा ही है. उसको किस तरह से इस लायक बनाया जाता है कि वो पर्दे पे आ सके. बिल्कुल. ये स्किल हम प्रोवाइड करेंगे. Thank you so much for being a part of this small chat, and I'm so grateful आप अपना time निकाल के आ पाए. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So that is a wrap from Made for Media. But you keep tuning in to our channel because we'll be bringing you more and beautiful people on our show, which is called as Made for Media. Till then, keep smiling and keep watching movies.